You're watching Reality Check. Every night on this week on the show, we've focused on what is turning the fascinating high-stakes elections in Uttar Pradesh, from jobs to caste dynamics and more. Tonight, another key turning point in the UP battle is for the OBC vote, the other backward caste. Now, they're about 40% of Uttar Pradesh, of which the Yadavs was solidly behind the Samajwadi Party at about 10%. There are no exact figures. These are all guesstimates. The BJP, so far seen as an upper caste party, has expanded. And as it expands its social base, has targeted the remaining 30% OBCs, often just referred to as the non-Yadav OBCs, broken into dozens of smaller castes like Lods, Kurmis, Sainis, Nishads, and so on. Now, this targeting of the non-Yadav OBC has given the BJP a numerical advantage in UP's caste arithmetic. Until now, largely it was the upper caste that were leaning towards the BJP. They were only 20%, but if you add the non-Yadav OBCs of roughly 30%, a section of the Dalits, let's say a ballpark of 10%, that gives roughly a figure of 60% leaning towards the BJP, while on the other side, leaning towards the SP are Yadavs 10%, Muslims approximately 20% in Uttar Pradesh, 30%. So 60 on one side, 30 on another. Again, remember, these are not absolute numbers, but it gives you an idea of how the BJP's social base has expanded and has allowed it to win in UP in very, very significant ways. Now, this tilt, this grooming of the non-Yadav OBCs is reflected in the data. According to the Center for Science Social Studies, CSDS, BJP's non-Yadav OBC vote share has zoomed from 2009 Lok Sabha elections, where it was about 30%, to the 2019 Lok Sabha elections, 70%. So it's more than a double jump, exit poll data. But scholars like Gilles Vernier and Christophe Jaffrelot have argued that despite this active outreach to smaller OBC castes, the non-Yadav OBCs, the BJP still remains an upper caste dominated party. As per the data that they've crunched, BJP candidates in the 2017 Vidhan Sabha UP Assembly elections, upper caste 184, almost 50%, even though upper caste is only 20% of the population, while OBCs were only 96, just 25%. So 50% upper caste, 25%. So there's a big gap. Now, this is reflected in the BJP MLAs in the current UP or the outgoing UP Assembly, where the upper caste MLAs are about 50% and OBCs are just half at about 24%. In the Yogi cabinet, again, upper castes are many more, 50%, OBCs are only 35%. Now, as a corrective to this upper caste dominance in the lead up to the UP elections, the Modi government dramatically reduced the number of upper castes in the union cabinet in that last big reshuffle which was conducted in July last year. So there, if one looks at it, the upper caste in the union cabinet during Modi 1.0 were almost 80%, according to Gilles Vernier and Christophe Jaffrelot. But now, after the July reshuffle, that number has fallen to just over 30%. So there's been a big drop in the number of upper castes in the Modi cabinet, an attempt to send a signal that the BJP is serious about reaching out to particularly the smaller OBC groups. But the BJP's rivals, especially the Samajwadi Party, are now making concerted efforts to challenge this dominance, tying up with a host of parties representing these smaller OBC castes, some of them former allies of the BJP. Now, these SP's alliances rival, if not even, have started to overtake the BJP in this election. Look at the two alliances now when it comes to these smaller OBC caste parties. The BJP has the Apna Dal party, which is a party of the Kurmis. This is another smaller OBC section, and the Nishad party, which is a party of the Nishads, the boatman community OBCs. The SP alliance, on the other hand, has the SBSP party of Om Rajbhar, which targets the Rajbhar OBC community. The breakaway faction or the rival faction of the Apna Dal, which is a Kurmi-based party or a Kurmi-centric party, and the Mahan Dal party, which is a party largely of the Sainis and Kushwahas, again small OBCs. And the Janwadi party, a party of the Nonia OBC community. Moreover, the exit of OBC leaders like Swami Prasad Maurya and others from the BJP
appears to have made the race for this section of the smaller OBC groups, this non-Yadav OBC pool, into a more contested fight. All right, before we open it up to panel, let's go across first. I spoke earlier to Om Rajbhar. He, of course, is the president of the SBSP, which, as I mentioned, was earlier with the NDA and is now with the Samajwadi Party alliance. And I began by asking him that isn't it the case that even though he has left and joined the Samajwadi Party, large sections of these non-Yadav OBCs, यही मेरा सवाल था कि जो non-Yadav OBCs है राजभर साहब, ज़्यादातर बीजेपी उनको टारगेट कर रहा है और आंकड़े भी बताते हैं कि वो बीजेपी की तरफ भारी मत से वोट दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। जैसा कि आपने दिल्ली के चुनाव में भी देखा, यही हमारे गृह मंत्री जी रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हों, चाहे जितने भी भाजपा के नेता दिल्ली में प्रचार किए, तो वो लोग भी यही बात कहते थे कि 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं। फिर बंगाल गए तो वहां भी यही बात कही कि 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। और यहाँ जो अति पिछड़ी जातियां जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनी तो बनते ही अति पिछड़ों को जो छात्रवृत्ति देना था बंद कर दिया। ये सामान्य वर्ग को तो छात्रवृत्ति देना सभी बच्चों को दिया, लेकिन पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया, बजट नहीं दिया, इससे नाराज हुए। पिछड़े जाति के लोगों के साथ थाने पर जो भी चाहे अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटीक पासी केवट बिन मला जोड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोण खरवार भूमिहार बिहार नाई आर्या कर बंसी बंजारा बहेलिया कंगार, इनमें जो गरीब तबके के लोग हैं, ये जब थाने पर गए तो थाने पर जाने के बाद दरोगा जी जाति पूछ के गाली दिए, जाति पूछ के इनको मारते थे, जाति पूछ करके FIR होते थे। इससे लोग 5 साल में ऊब गए। ऊब करके भारतीय जनता पार्टी से रास्ता फिर खोजने लगे कि कहां जाएं। तो फिर विकल्प ओम प्रकाश राजभर ने तैयार किया कि हमने जैसे वो पिछड़ों की बात, लेकिन ये बताइए, नहीं ठीक है, आपने तैयार किया, लेकिन ये बताइए कि जैसे भाजपा कहती है कि हमने तो बहुत इन लोगों को सम्मान भी दिया है, जैसे मैंने बताया कि पिछले कैबिनेट की जो रिशफल हुई थी, मोदी सरकार थी, उसमें कई सारे OBC मंत्रियों को लिया गया। देखिए, ये चुनावी मंत्री बनाए गए जब 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा लूटा गया, तो ये चुनावी मंत्री क्यों नहीं बोले? उत्तर प्रदेश में चुनावी मंत्री बनाए गए तो इनको इनका हिस्सा 23,000 पद लूटा गया, योगी जी ने लूटा, इस पर क्यों नहीं ये मंत्री बोले? इनकी जबान नहीं खुली। 1700 थाने हैं, उसमें हिस्सेदारी के लिए ये क्यों नहीं बोले? पिछड़े समाज के नेता, 52% आबादी है, 22.5% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जिनको थाने में हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं बोले? 350 तहसीलें हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है। जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी होती है, हिस्सा लूटने का काम करती है। और जब वोट लेने की बात आती है तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, ये समाज हमारे साथ है। उनके साथ क्यों रहेगा? किस वजह से रहेगा? नहीं, लेकिन ये बताइए, चरम पे है। आपने देखा कि योगी जी मोदी जी के ललका साण से पूरा किसान आम आदमी परेशान है, महंगाई से त्राहिमाम मची है, बेरोजगारी चरम पे इन्होंने पैदा कर चलिए, लेकिन नहीं ओम प्रकाश जी, ये सब आप कह रहे हैं कि ये समाज क्यों रहेगा बीजेपी के साथ, लेकिन सारे सर्वे बताते हैं, और अब जब हम जमीन की तर पे भी जाते हैं और हम बात करते हैं सैनियों से, बाकी ये OBC कास्ट से, ये तो बीजेपी के साथ हैं अभी भी काफी स्ट्रांगली। क्या आपने नाई गोंड पाल प्रजापति कुम्हार लोहार आरा कर्कबंसी बंजारा बहेलिया खंगार से पूछा? आप पूछते किससे हैं? जो जागरूक कौमें हैं। जैसे आपने सैनी की बात किया, आपने कुशवाहा की बात किया, आपने पटेल की बात किया, यादव की बात किया, आपने इन जातियों की बात किया होगा ना। लेकिन उसके बाद 38% वोट है जिससे आप नहीं बात कर सकते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बात करता है। हम उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं से कहते हैं। आज के तारीख में 50 से 60% पटेल नाराज हो गया है बीजेपी से, 50 से 60% नाराज कुशवाहा साग के सैनी माली हो गया है, क्योंकि हम तो उनके बीच में घूम रहे हैं, वो उनसे नाराज हो गया है। हम उन्हीं के बीच में जाते हैं,
जो भाजपा के पास नहीं, लेकिन ये बताइए, हर तबके से बड़ी संख्या में जी, लेकिन नहीं, लेकिन ये जो बात है कि आप कह रहे हैं नाराज है, लेकिन ये भी तो एक परसेप्शन है कि जो सपा है वो यादवों की पार्टी है, और ये कई सारे जो छोटी जातियों का जो आपने जो गणित दिया, ये उससे नाराज है। वो कहती है कि यादव इन सब हम सब पे भारी है। नहीं, अब देखिए यही बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 डीएम यादव थे तो यादव बात था। योगी जी की सरकार में 22 डीएम ठाकुर हैं, तो इसको कोई ठाकुर की सरकार नहीं कह सकता है, क्योंकि वो बैकवर्ड हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी जिस कमरे में मुख्यमंत्री के बैठते थे, बैकवर्ड होने के नाते जब योगी जी ठाकुर बन के आए तब उस कमरे को दलित बना करके उस कमरे को गंगा जल से धोया गया। यही न कारनामा भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अभी नहीं, आप देख लीजिएगा कि 10 मार्च को जब गिनती होगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की बनने जा रही है। हम जहां जहूराबाद में हैं, गाजीपुर में 7 की 7 सीट हम जीत रहे हैं, बलिया की 7 जीत रहे हैं, मऊ की 4 जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सारी सीटें आप जीत रहे हैं, वो तो आप कहेंगे। सॉरी, वी हैड टू लीव इट देयर। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी कि आपने हमारे साथ बात की। Okay, let's open it up to panel. We have Shant Prakash Jatav, leader of the BJP, is here with us. We have Supriya Srinath of the Congress is with us, and Gilles Vernier, who's political science at Ashoka University, Trivedi Center for Political Data. And let me start with Sanjay Kumar, professor psephologist at CSDS. So Sanjay ji, when you look at it now, because we are now sort of fairly into the UP polls, we've almost hit the halfway mark. You've also been making visits and surveying. Do you find that this strong hold that the BJP had on the non-Yadav OBCs, this crucial vote bank, has that started to shift somewhat with Akhilesh trying to reach out to them and perhaps some anger, etc. within them? Or is it still as it was earlier? No, Vasu, you have already used the word, has that non-Yadav OBC vote shifted somewhat? Yes, I don't think that you will meet anyone in the field who would say that non-Yadav OBC vote bank of BJP has not shifted. It has shifted. The only question is about the extent of that shift. Is the shift a massive shift, or do we see a shift which is only a minor shift, or is it a significant shift? Right. I think this is the only point of investigation, debate, discussion, or things to watch on the ground when you go to the ground. What is your sense? What is your sense? Is it a minor shift or is it a significant shift? In between both. You might say, oh, I'm playing with these words. It is not a minor shift, but it is not a significant shift. And when I say significant shift would mean more than 50% have shifted. I don't see that happening. Maybe it is somewhere between minor shift and significant shift. Okay. You can get the hint. This may be in the range of, say, whatever non-Yadav OBC vote BJP got in 2017, 35% of that may shift towards other parties. Another party would be Samajwadi Party Gathbandhan. Basically, Samajwadi Party. Okay, that's fair enough. It's as you said, it's a nuanced thing. शांत प्रकाश जी, ये एक चिंता की बात नहीं है कि बीजेपी के कई ओबीसी नेता छोड़ गए, कुछ आपके जो सहयोगी हैं वो भी छोड़ गए, और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे एनालिसिस किया है त्रिवेदी सेंटर ने कि अभी भी भाजपा कहती है हम ओबीसी के लिए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो अपर कास्ट डोमिनेंस देखिए, जैसे 2017 में जो अगर आपके एमएलएज का वो आंकड़ा जो मैंने बताया कि अभी भी 50% एमएलएज अपर कास्ट के हैं और सिर्फ 25% ओबीसी के हैं। श्रीनिवासन जी, इनफैक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो धर्म या जाति के आधार पर लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वो यादव को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका मैं आज दिन में भी प्रोग्राम देख रहा था, आप दलित बस्तियों में जाकर के सब लोगों से बात कर रहे थे। इनफैक्ट क्या है कि वो लोग चाहकर भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। हाँ, मगर मैं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ 25% एमएलएज कैंडिडेट आपने 2017 में ओबीसी को दिए थे, अभी भी 50% अपर कास्ट था 2017 में आपके कैंडिडेट्स, तो कहां अब आप प्रो ओबीसी हो गए अचानक?
नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जातियों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में है। इसमें हम उसको कहें कि ये ओबीसी के कम है या ज्यादा है, जो जिस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हैं, उनको आगे बढ़ाया जाना है। हम लोग जाति के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ता के काम के आधार पर टिकट देने का काम करते हैं। तमाम लोग हमारे पास में आए और तमाम लोग, कुछ एक लोग चले भी गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बहुत बड़ी तादाद में लोग। आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप तो ओपनली कहते हैं कि भाई हम ओबीसी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ओबीसी सम्मेलन रखते हैं, आप एससी सम्मेलन रखते हैं, आप सारी अलग अलग जातियों के सम्मेलन और वो तो रखते हैं। उस कम्युनिटी में जाने के लिए जब आप लोग पूछते हैं प्रश्न, तो हम उस कम्युनिटी में जाकर के उनसे सीधा डायलॉग भी करते हैं, मगर सरकार की जो भी पॉलिसीज हैं, वो उनकी जाति या धर्म देख करके नहीं, उनकी आवश्यकता देख करके उनको दी जा रही है। और मैं सरकार इस वक्त पॉलिसी, सरकारी पॉलिसीज पे इतना नहीं, बट जितना पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। बट एनीवे, सुप्रिया श्रीनेट, इज द कांग्रेस लूजिंग आउट इन दिस बैटल फॉर द OBC vote, particularly in the non-Yadav OBC vote? As Sanjay Kumar said, if at all they're going to shift this crucial sort of group, it is to the SAPA. You know, quite frankly, Vasu, analysis like this humors me, and I'll tell you why. Whether it is the Yadavs or the non-Yadavs or the Kurmis or the Jatavs, they've all been at the receiving end of a very ineffective government. They've all been at the receiving end of insensitivity that Yogi Adityanath's government is actually synonymous with. And I don't see why anybody is going to vote for the BJP, because look at the number of leaders who've quit the BJP in the past few months, and some very prominent non-Yadav OBCs as well. Having said that, the caste arithmetic, I think, is going to be trounced by the misgovernance arithmetic of Yogi Adityanath, whether it's unemployment, whether it's high prices, whether it's farmers, because they belong to all communities, but and I don't see them cycling off. I just want to jump in quickly to say that if you looked at the CSDS figures, the number of percentage of non-Yadav OBCs voting for the BJP jumped from 30% in 2009 to 70% in 2019. This is, after the Yogi government had come to power, and more than double. So it's a huge jump. Very quick. Yes, it was a huge jump. We will also see a very quick and a very big reversal of that. Mark my words on this. These guys are not going to vote for the BJP. Okay, Gilles Vernier, because you have done very detailed analysis of the breakup, caste-wise breakup of the candidates in 2017, which is why we have this data on the larger representation of upper caste amongst the candidates, amongst the MLAs, and of the Yogi cabinet. This time around, I'm assuming because the candidates list have not been fully released, so I suppose you're still processing. But do you get a sense that the BJP is now getting a bit worried that this non-Yadav, the perception of being pro these smaller parties, castes, and it comes to reality in terms of representation, in terms of ministries, it's not quite been what was promised, and that is a bit of a worry for the BJP. Yeah. So if you look at, the last three governments in UP, all of them have won single majorities, and all of them have, and it's been won by different political parties, and all of them have won on the basis of the claim of inclusiveness. And at least the BSP and SP regimes have actually failed to deliver on effective power sharing while in power. And so what we see in UP and what we have seen in UP over the past 5 years is that electoral arithmetic and electoral inclusion does not necessarily translate into effective power sharing. Right. And it does not translate into policies that actually reflect what the different components of those majorities want, which is why you've seen all these defections in those movements. Second, the arithmetic that you showed at the beginning of your show about the caste arithmetic, it's based on the premise that all non-Yadav votes voted for the BJP, that all Yadav votes voted for the SP, but it's not the case, right? Those groups may vote
vote Of course. cohesively for parties now, Of but course. it fluctuates over time. And so, so we're talking about small differences also susceptible of making, large differences. And that would explain why political parties in power like the BJP would be nervous right now. I agree. As I said, those were just broad brush, just giving you an idea of the broad brush strokes of how these different caste coalitions measure up. I just wanted to ask you, Sanjay Kumar ji, that the question that I asked OP Rajbhar, that the fact that many of these smaller OBC communities, and when we meet them on the field also, we hear this, that there is still a reluctance, while there may be some amount of disaffection with the BJP, there is still a concern about Sapa because of that reputation of the Sapa being a party of the Yadavs, of the Yadavs sort of, being the Bahubalis over these other smaller castes. Is that one of the reasons why, partly, as you said, it's not been such a big shift away to the other side? Vasu, there may be several reasons, and what you have stated is one of those reasons. The other reasons why we don't see a very significant shift of lower OBC away from BJP is because of some of them have benefited from the welfare schemes. Also, we should not forget that BJP also has managed to form alliances with some regional parties, which has a support base among non-Yadav OBC vote. So those leaders will also carry some weight among their own community, and that is why we don't see a massive shift away from BJP among the lower OBC castes. Right. So, of course, as you said, there are multiple reasons there. But ये बताइए शांत प्रकाश जी कि जैसे ओपी राजभर कह रहे थे कि अगर इतना सब ओबीसी कम्युनिटी खुश होता बीजेपी से, तो इतने सारे आपके लीडर और नेता और जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब छोड़ के क्यों चले गए? कहाँ कोई छोड़ करके गया है? जिन लोगों को राजभर जी चले गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, मौर्य कितने जी लोग की चले बात गए कर रहे हैं जी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, उनकी बेटी हमारे साथ है, तो इसमें ये नहीं है कि वो जो है मौर्य जी तो चले गए हमारे बीच में। वही बता रहे ना कि महत्वाकांक्षाएं जो है वो कुछ ऐसी चीजें रखी होंगी जिसके कारण से जो नहीं मानी गई वो छोड़ करके चले गए जी। मगर ये विषय जो है ठीक है, अलग है। मगर हमारे पास में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी उस कम्युनिटी से हैं। हमारे पास में स्वतंत्र देव जी जो है वो भी ओबीसी कम्युनिटी से हैं। बहुत अच्छे नेता हैं हमारे साथ में, और वो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं। तभी दूसरे दलों के जो लोग आए हमारे पास में, वो उसका उन्होंने लाभ भी लिया, और अल्टीमेटली जो लोग चले गए तो तमाम नए लोग आए भी हैं हमारे साथ। और कहीं भी हम लोग कमजोर नहीं है, कैडराइज्ड पार्टी है। हमने डेवलपमेंट करके लोगों को तमाम सुविधाएं दी हैं। हम उसके आधार पर जीतने जा रहे हैं। कास्ट बेस पर हम बिल्कुल भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते। ठीक है, हर कम्युनिटी जहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, अगर बल्कि आप बार बार ये कहते हैं, ये एक तरह से एक कहने की चीज है, इसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस बारीकी से खुद हमारे पूछने के ऊपर पहले ही मीडिया को बताती है कि हमने कितने कास्ट से कितने लोगों को कैबिनेट में पोजीशन दिया, वो ओबीसी नहीं, ओबीसी के अंदर वो क्या थे, राजभर थे, कुर्मी थे, पटेल थे, जो भी थे, ये सब बीजेपी बताती है। तो आप बिल्कुल कास्ट और कास्ट के आधार पे पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, उत्तर और प्रदेश करते आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है इस बात को स्वीकार करना सभी। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि बाकी करते हैं, हम नहीं करते। मैं कहता हूं आप भी करते हैं, सब करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं। हमारे काम में हमारा डेवलपमेंट जो काम कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, कास्ट और रिलीजन का तो देखिए, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर तो कास्ट और रिलीजन के आधार पर सारा का सारा सिस्टम जो पॉलिटिकल है वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो आप डिनाई नहीं। सुप्रिया श्रीनाथ इंटरजेक्ट करना चाहती हैं। डेवलपमेंट भी जो है, अच्छा, डेवलपमेंट भी आप कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ, यस। I just have a small point to make. If you actually hear just 3 things that have been said today, the Tiloi MLA of the BJP says, we will snatch your and scratch your beard and make a chutiya. Another Vidhayak, Ms. Bhadoria says, तुमने अन्न ले लिया और अब हमें वोट नहीं दे रहे हो। और जो चीफ मिनिस्टर जी की खुद की लैंग्वेज है, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि आज जो युवा है, इतनी बिजली आ रही है, वो बीवी का
चेहरा देखकर 2 नहीं 10 रोटी खा रहा है. Are these the statements that a party that has really done work going to make? Right. That actually opens up the debate because you've done no work. In the name of development, you are borrowing roads from America and dams from Andhra Pradesh and airports from China. I wish you had done work. You would have shown that. आपकी तो जॉबलेस वेबसाइट पर भी चाइना के लड़कों की फोटो है. 24 करोड़ की जनसंख्या में आपको आबादी के लोग ही नहीं मिले उत्तर प्रदेश की. ये आपका विकास का मॉडल है. और जिस भाषा का उपयोग आप लोग कर रहे हैं इस चुनाव में, वो ना करना पड़ता अगर आपने काम किया होता. जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो असंसदीय ही नहीं, अमर्यादित भी है. Right, Gilles, last word from you. Do you see same question asked Ajay? Do you see a significant shift of the non-Yadav groups to the Sapa Gathbandhan or not? Not very much. What's your sense? Well, I have to agree with Sanjay Kumar. There will be a shift. Just how large, we don't have, indications. But one thing that I can say is that you don't sway voters only on the basis of one variable, not even caste, right? The reason why the BJP was so successful at attracting so many OBC votes was not just on the basis of a caste-based discourse, although it also played a role. But it also has to do with religion, with communal appeals. It also has to do with development or the promise of development or welfare provision, right? And so the question is not whether the SP can sort of tangle these small caste leaders that it creates, alliance with, and that are actually really local, small formations that don't carry a lot of weight, but whether they can also propose something else than descriptive representation to attract a lot of voters. Yeah, it has to be caste plus. It can't just It's always caste plus many other factors. Always. All right. Okay. We'll have to leave it there. Out of time. Thank you all so much for joining me on Reality Check. Thank you so much for watching. Good night.